बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीशे माह साल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज गुलफशान शकील सदीकी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ नूरुल हुदा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक आप सबको। We have got Pakistan as a reward and gift of untiring struggles and untold misery suffered by our forefathers. Independence Day is truly a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala for us, as we stood strong and protected only because of this independence. Youth comprises that sphere of the societies who are yet the developing birds and fate changes for a nation. But responsibility lies on our shoulders as parents, teachers, and elders to preserve and propagate national integration in the hearts of our younger generation. Therefore, today we are here with our valuable guests to discuss about the importance of positive direction and guidance that must be provided to our youth to make them unable to get success in all these spheres. So without further delay, I would like to introduce my today's guest. So our first guest is Ms. Sana Zaidi. She is a PhD scholar and visiting faculty at different universities. Welcome, Ms. Sana, and Jashn Azadi Mubarak. Thank you so much. जश्न आजादी आपको भी बहुत बहुत मुबारक है, तमाम सुनने वालों को भी. Thank you. Then we have Ms. Nasra Haris. She is a seasonal educationist. Assalamu alaikum, Ms. Nasra. Jashn Azadi Mubarak. And same to you, Jashn Azadi Mubarak. Thank you. Last but not the least, we are having Ms. Kashfia Latafat. She is also an educationist and a researcher. Assalamu alaikum, Ms. Kashfia. Walaikum assalam. How are you? I'm fine, alhamdulillah. Jashn Azadi Mubarak. All of you are also feeling fine, and happy Independence Day to all of you. Thank you. Thank you so much. And I welcome all of you to the platform of Nurul Huda Education Private Limited. Thank you for coming. So as we all know that today we will going to talk about our youth, that how can we guide our youth, how can we provide the suitable environment to our youth. So my first question is, as we all know that new kinds of threats or hybrid war offer openings for rethinking youth education through hybrid pedagogies. So how helpful it would be in providing new avenues with positivity to our youth. So I guess, Ms. Sana, can you please answer this first? Sure, definitely. Basically, the thing is that our teachers and our students facing this situation for a very first time. Pandemic and hybrid learning come together, and we are not aware of it as a teacher and a student too. So many students are facing so many challenges, and there are so many barriers for them. The technological issues, and they are facing different challenges of the learning, especially teachers who are not aware of it, how to go online, how to face all these challenges and conduct classes online and cater students' queries and handle them and facilitate them. So there are so many issues teachers as well as students both are facing regarding pedagogies. We need to see traditional classroom is totally different, but when you talk about the online learning, so it's a bit difficult for the teachers as well to look after all the students and to answer every query, because physically
students are willing to go their cables, and they can discuss their queries, and they get the answer from there, or they can visit libraries and other places for their research and for their solution of their problems. Regarding online teaching, teachers have to plan some strategies that will be fruitful for the students. Like digital literacy, it's all about the students are continuously sitting in front of the computer or the laptop, and continuously they are making their assignments on the computer. So it impacts on their health as well, on their its impact on their cognitive skills as well, because they are unable to think about any other things. For their critical thinking, teachers need to develop some strategy. Despite the digital literacy, they have to engage them through other activities as well, which is not including digital, which is not including through internet, through computer, or something like that. Teachers must have to involve the students through some experimental learning, so they can learn, they can experience by themselves, or then they can get the exposure to bring something new. They can learn from their own learning too. So we need to plan some strategies, or we need to plan our content in that way that a student get a more exposure to learn and to discover new learning strategies. मिस नाज़रा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये जो पॉजिटिविटी की जो मैंने बात की कि विद पॉजिटिविटी हम कैसे नए एवेन्यूज दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यूथ को, सो मिस सना ने बोला कि हमें स्ट्रैटेजीज हम कुछ ऐसी प्लान करें. सो व्हाट कुड बी दोज स्ट्रैटेजीज? वो क्या स्ट्रैटेजीज होंगी जो हम प्लान करें? और देखिए, जब मैं पॉजिटिविटी की जो बात कर रही हूँ, सो पॉजिटिविटी आई मीन के हाउ टू इनकलकेट दैट पॉजिटिव बिहेवियर, not only that is towards the education but also towards the humans also. So please. Sana is also very right, but the thing I see is the base for the key. क्या था हमारे स्कूल्स के टाइम में? स्कूल कुछ और था, अब के स्कूल के टाइम में स्कूल कुछ और. विद इन बाउंड्रीज भी चेंज तो बहुत आ गया. On the cheese, which is not having any point. Definitely now we are on hybrid, we are online. The world is very small now, and everyone can be genuine. So हम कैसे possible है कि teachers, when we were fighting with many things when we went during COVID towards the online. The same thing is happening with the students. My students ने भी वही struggle किया, but definitely this is our responsibility to keep that maintained for them as well. अपनी साथ रखते हम शायद उस limitation में हैं, उस responsibility के साथ हैं, where we have to be very much mature with our steps taken for them. How we will reach towards those strategies, how we guide them, how we support them to hold all these in their hands in a positive manner. And I think the value in the things जो हमारे अपने एक्शंस हमारे अपने लिए हैं, इसको मजीद केयरफुल होकर हमें उनके एजेस के साथ डील करना है. कि मुझे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मेरी आपकी क्वेश्चन से, वो जो बहुत क्लियर है, जब मैं बहुत क्लियर अल्फाज में कहूँ, हम बच्चों को हाथ में नहीं पकड़ सकते. आप who don't know about the child there and whatever that child is doing right now. So now we have to be much sharp as they are. We have to be much active. We have to be much accurate and very much expert about many things. Side by side, can't ignore the psychological factor of every page we are doing right now as teachers as well as students. So when we combine all both, then we will be able to generate the right most strategies for it. Exactly. मिस कशफिया, अगर मैं आपसे एक सवाल ये करूं इसी के तसलसल में कि
हम बात कर रहे हैं अपने यूथ की, हम बात कर रहे हैं अपनी यंगर जनरेशन की. सो डू यू थिंक कि आज का हमारा टीचर और आज का हमारा पेरेंट उनको उसी तरह डील कर रहा है जैसे वो चाहता था कि उनको डील किया जाए व्हेन वी वर स्टडी, व्हेन वी वर एट देयर एज? सो आप क्या समझती हैं एज अ मदर, एज एन एजुकेशनिस्ट, कि क्या हम अपने बच्चों को, क्या हम अपनी यूथ को उसी तरह से डील कर रहे हैं? First thing is, Mirashna, that in this current situation and scenario, the traditional practices is no more working. One thing. Another thing is that we need to change our mindsets as well, which maybe works in the previous system, that the structure in which the education system was moving on, but it's no more that structure is usable in this scenario after this COVID-19 issue. We have seen a very clear picture that the children, and not just children, as you are talking about youth of this nation, they are very much talented, and they are much ahead in using of technology as well. Keep this thing in mind. When we switch towards the virtual classrooms, and that switching was very quick, and we have very less time to plan, or it was, I was thinking about haphazard situation थी. The teachers were not very clear at that time, at that moment, कि उनको किस तरह से लेके इसको चलना है learning को. One thing. Another thing is that कि हम as teachers, as parents, we are trying our level best to cope up with these difficulties which we are facing. I must say that I am always be a very positive person, and I am always looking on both sides of any aspect, any problem, any difficulty, like positive side and negative side. So if you, very first thing is that if the teachers and the parents are having a positive attitude and deal with the youth in a very positive manner, if you are having a attitude or body language which shows a clear identification of that you are doubting, आप doubt कर रहे हैं बच्चों पर, तो वो एक ना aggressiveness, एक irritating behavior आपको नजर आएगा. Very first thing is that being a mother, being a teacher, that you need to develop a relationship, because in traditional setting we have a face-to-face conversation with our learners, but now the situation is totally different now. The very first thing is that we are not having eye contact with them now. They are on behind the screens, and that is the really very troublesome kind of thing. The first thing, as a teacher, as a parent, we need to develop our connection with our youth, discuss their issues. Absolutely. Absolutely. Our own listening skills. We are not have to listen. हम सिर्फ इसीलिए सुने कि हमें सब उनको समझाना है. नहीं. We have to give some time or space to them as well, that yes, we are listening. Please share your difficulties with us, so we will be able to plan accordingly. Very first thing. Another thing is that the strategies, the things, self-regulated learning is looking very, very smart way to teach the youth, but they have some advantages as well as some disadvantages as well. The basic advantage which I feel is that the students have a pace, learn on their own pace, within their own time, flexibility. Ms. Kashfia. Yes. I can hear you. Yes? Yeah. I can't hear you. Pardon? Okay. अच्छा, one thing, नहीं, actually आपकी आवाज बहुत distort हो रही थी. There is another question that is in my mind, that what do you think, what are in today's scenario? Your voice is not clear to me. Ms. Nasra, would you like to? Sorry, I would request you to please repeat your question. You will not. It's not audible. Hello. If any other person, okay, I'll repeat my 4 challenges younger days. Can you hear me?
Yet Philip, it's better, but Can voice you very much do difficult. people hear me? Yes. Yes, now. I cannot hear. Hello. Gulafsha is not audible, I think. No, she's not there. Hmm. I I cannot think, hear Kashwa as well. You may answer Yes. if you want. Yes, the question was that how we deal with that. So being a teacher, what I feel is that self-regulated learning is have both the sides. We can take it that advantage as well, and as I discussed in the beginning, that be positive. So in positive side, we need to develop our connection with the learners, and we need to strategize our learning in a way that they have to take the task and they will go on their one-on basis or in a separate rooms or in a separately individual basis, and then they come back and share their responses. So in that way as well, we engage the learners. And another thing is that the usage of teachers should use that rubrics which give them a clear picture that how they have to perform that activity, how the assessment level must be there. Na? So the formative assessment is in between their lessons, We also need then to we be will very able much to gauge that learning, gauge disciplined their for that. learning. Yes. Achha, For all these again, things need to again, Speak I now. hope, can you people hear me now? Can you people now hear me you now? Yes, Gulab, now right, you quite Now, clear. now. Actually, there was a connectivity issue. What I was asking that what are the core challenges of our younger generation? the basic challenge is Oh. that Laksha, that the youth Miss is Nasra, having- can you please okay, Miss answer Nasra. that? Can I answer that? Yes, Sana. please, Miss Sana, please. You can. Acha, the thing is that the basic issue and the biggest challenge, a major issue we are facing nowadays is motivation. How to motivate students, how to make their will stronger, and they can love to do whatever the task it is. Because sitting at home continuously, watching videos, watching continuously television, laptop, doing work on the computer, see your mind get stuck in that, and you're continuously it's supposed to be like that. We are in a closed room, there's no light and there's no creativity, no innovation. Then how to perform your task in a creative and innovative way? We as a student, I'm including myself as well, we bound ourselves in artificial barriers that we cannot do that, we cannot approach that, we cannot think out of the boundary, because due to the pandemic we are bound, we are in limitations, so we are not allowed to do that. So this is the time where teacher can motivate them. They can increase their intrinsic motivation and extrinsic motivation also, and they can let their parents to support them emotionally, because this is the right time that parents got engaged with their studies too, and they can support them as well. So allow them to do some experiential learning at home instead of reading, writing, and making assignments on Word and PowerPoint presentation and doing summation on online. So if you do something practical work, you engage your own self, your parents supports you as well, and you can get the power to discuss on your behalf. You can tell them that yes, something you have done by your own self. So this is a time that teachers and parents need to put their combined efforts to improve their creativity and motivate them by continuously appreciating them, encouraging them, because this is a very hard time for the student as well and for the parents as well. Continuously they are seeing you sitting in the front of the computer and doing nothing, just listening and reading and just watching all the time. So this is the biggest challenge. We need to think about something out of the box. We need to go, we need to find out a skill that we can improve. We need to give them a task. In that way they can involve their own self, something they can getting an exposure to come up with some new ideas, come up with the solution as well. So motivation is the biggest challenge nowadays. I would also So, the
words of Sana here, Gulakta, as the answer of your question. जी 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 Of our students. I think the very first problem, whether you take it on lighter note or serious note, but this is, as I am feeling with my experience right now, that the very first challenge to every child, I'm talking about most of it, they need to face their parents. They need to satisfy their parents. Here, I'm very much clear with my words. And on other hand, they need to complete everything according to their teacher's instructions. I think here we are, I think, ignoring the role of teachers and parents. जैसे हम normally कभी-कभी discuss करते हैं ना, teachers और leaders और managers आपस में interchangeable terms हैं और ये है वो है. I think right now we need to absorb a bit more. Now parents and teachers, why they are standing far from each other? Right now, I think they cannot. The core challenge of child is now is to deal with all the scenarios. Teacher is somewhere else. Now parents are also, I think, in need of planning something like their child. एक बच्चे को support चाहिए अभी टीचर की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी. पेरेंट्स खुद भी एक लर्नर है अभी. अच्छा, sorry to interrupt you, Miss Nasra. Actually, particularly, I have one thing in my mind when we talk about the hybrid war. So basically, our youth is going पीछे जा रहे हैं. वो लोग अपने रिलीजन से दूर जा रहे हैं, अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं. वो जो एक होता था कि पहले टाइम पर पहले एक टाइम हमारा होता था कि हम जो है उस टाइम पर अपने बड़ों के साथ बैठते थे और ये सब होता था. बट बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड वॉर मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये भी है. इसके बारे में क्या कहेंगी आप मिस नाज़रा? आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग इज बच्चे तो एग्रेसिव हो रहे हैं, बच्चे तो प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं, बच्चे तो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट दोस प्रॉब्लम्स राइट नाउ. क्यों? हम खुद स्ट्रगलिंग थे टीचर्स. वी शुड एक्सेप्ट कि हमारे पास वो वाली एक्सपर्टीज नहीं है, वो तमाम चीजें नहीं है. वी आर नॉट प्लान्ड विद आवर स्ट्रेटजी कि हमने उनसे कैसे डील करना है, हमने उनको क्या हम कभी भी सेटिस्फाई होते हैं ना विच यू आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ बच्चों में वो वाली वैल्यूज और सारी चीजें मिसिंग हो रही हैं. वी आर गोइंग बैक राइट नाउ. बैक पे और फ्रंट पे जाने की कंडीशन तो तब होगी जब एक बैलेंस क्रिएट होगा ना. तो दैट बैलेंस इज राइट नाउ मिसिंग. तो हम किसी भी सेटिस्फेक्शन लेवल की तरफ तब जाएंगे जब हम शायद एक बेसिक लेवल को मीट कर लेंगे. तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों के लिए, कैसे कर सकते हैं वो? क्योंकि देखिए I think the whole world is going towards the values and this is all about the values. Absolutely. Everyone is talking about value-based teachers as well. Acha, one more thing that is in my mind, that family challenges also affect these capabilities of our youth, our teenagers. So in that way, Kashmia, can you respond on that? What should be the role of teachers especially to overcome or to subdue that situation? क्योंकि हमारे बच्चे, अगेन फिर हम वही बात करेंगे कि जब हम हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं तो हाइब्रिड वॉर में हमारा बच्चा जो वैल्यूज से दूर हो रहा है, जैसे कि मिस नाज़रा ने कहा, कल्चर से दूर हो रहा है, रिलीजन से दूर हो रहा है, वो अपने बड़ों से दूर हो रहा है. तो उसमें टीचर का क्या रोल होगा कि जब वो अपनी फैमिली में उसको चैलेंजेस फेस करने को मिल रहा है? The issue is that we need to focus on one thing, that as you're talking about hybrid war or the issues which the youth is saying, they are away from their religion, they are not liking to interact with the cultural reforms which we have around. The issue is that we need to rethink our own attitudes and body languages कि हम कहाँ जा रहे हैं. वही बात जो अभी नाज़रा ने कही कि हमारा balance somewhere is out. What we need to we need to think again on these issues कि हमें कैसे अपना बैलेंस मेंटेन करना है. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि आप वैल्यू बेस्ड, आप पूरी अराउंड द ग्लोब पीपल आर थिंकिंग अबाउट वैल्यू बेस्ड सिस्टम. हमारे यहाँ ये चीज नई नहीं है, हम बीच में थोड़ा सा ड्रैग हो गए थे दूसरी तरफ, लेकिन अब इस सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक.
हम जब भी बात करते हैं हम तालीम की अकेले तालीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, हम करते हैं तालीम व तरबियत, तरबियत। तो हम वो द वैल्यूज आर मिसिंग, विच अगर हम इस लूप को हैंडल कर लें ना, तो बिलीव मी आपके हाइब्रिड टाइप के इश्यूज तो कोई मैटर ही नहीं रखते। आपका रिलीजन आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। Not just religion, I'm not talking about the religion, the social aspects as well. Being a teacher, you are a role model. मैंने अभी पहले भी ये बात की थी कि हम जस्ट बी अ गुड लिसनर टू देम। आप डिस्कशन फोरम्स अरेंज करें एंड डिस्कस इश्यूज विद योर यूथ। अच्छा, अब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अच्छा, आप गेस्ट स्पीकर्स के थ्रू वैल्यूज को इनपुट करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात इतनी ध्यान से नहीं सुनते जितना एक गेस्ट स्पीकर जो जिससे वो इंस्पिरेशन भी ले रहे होते हैं, उनकी फील्ड से रिलेटेड है, कोई स्पेस इंडस्ट्री का आप पर्सन अपने यहाँ गेस्ट स्पीकर के तौर पे ले रहे हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बच्चों को भी बड़ा इंटरेस्ट होता है टीनेजर्स का इन चीजों में, तो वो अच्छा सना, नाउ सुनेंगे, ग्रैस्प करेंगे। प्लीज, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। सना, एक चीज आप अभी कुछ बोलना भी चाह रही थी, उसके साथ मैं भी कुछ एड ऑन करना चाहूंगी कि as a student, because you are a student also, so and you are dealing with the younger generation also, कि क्या course of action हमें provide करना चाहिए अपनी younger generation को, so that they can preserve the core values as Pakistanis, as humans, please. First of all, see, they are talking about values, value-based education. हमारी values क्या है? हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, whosoever we are following the religious, ठीक है, that's our belief as a human too. Respect, giving space to each other, respect other opinion as well, and respect yourself as well. ठीक है. The thing is that we are following the same syllabus. It's about 25 to 35 years old. All content they are following, we are following the same thing. And we are trying to impose them instead of inculcating them. ठीक है, हम अपनी जो content है वो impose करना चाहते हैं, हम inculcate नहीं करना चाहते। जहाँ तक values की बात है, मेरे ख्याल से इस वक्त this is the right time that parents and teacher both can work on their child, on their students. उनको ग्रूमिंग करने, उनको ग्रूम करने के लिए, उनकी ग्रूमिंग पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी, ये बहुत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए भी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट द राइट टाइम फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द टीचर्स एज वेल। आप टीचर्स जब क्लास कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो दे ऑलवेज asking the question randomly. Okay, you can give the space to each and everyone and respect everyone's opinion as well, and then you can give your opinion. Parents also support them in this way. घर पे हैं आप, उनको देखिए values आपकी ये है कि आप continuously is a learning process throughout your life. ये stop नहीं हो सकती हैं। जहाँ तक content based है, we need to I'm not saying the change overall, but as per the need of the today's era, we need to incorporate in our content that make more valuable for our student and for the teachers as well. Regarding challenges that students are facing nowadays, as a student, I'm also facing the same thing. We are unable to discuss some points face to face. We make them understand face to face more clearly instead of online. We are a bit hesitate, very shy, and sometimes we are afraid to discuss our own point of view in front of the teachers because might be they like or they don't, they dislike. So how to overcome these challenges? Teachers right now not available 24/7 for days for you, but still there are some opportunities that that we need to provide the student, that you can contact with your teachers whenever you are facing the issues and the problems. जी Miss Nasra, please. Yeah, Gulabsha, I would definitely connect this thing which Sana was saying right now, and we were talking about the values now. I will connect this with your first question as well.
We were thinking about how to go in a manner there. So these values are those bonds. These values are something which will guide us towards limit everything. There is no other thing which can limit us. सही, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है नासरा के वैल्यूज डेफिनेटली, बट अगेन कि मैं एक्चुअली आज मैं चाहती हूँ कि आज की हमारी इस पूरी डिस्कशन से हम कोई एक पॉइंट लेकर निकले, वो कोई एक एक्शन प्लान दें अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को कि वो हम बार बार ये बात करते हैं कि वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए विद द लर्निंग सिस्टम, बट हाउ वुड दैट इज अगेन whoever wants. The role of teacher is very essential and very critical in both ways. देखिए आप जब वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी अपनी रोल मॉडलिंग उसी को फॉलो करते हुए होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आता है कि आप उसे अपने चाइल्ड तक कैसे एड्रेस करें, ठीक। अब आप फिर वही बात आती है कि यू नीड टू डिस्कस द इश्यूज, आप उनकी बात भी सुने, ठीक है, उसके बाद अपना एक्शन प्लान प्रिपेयर करें, उन्हें स्ट्रेटजीज बताएं कि यू कैन मूव ऑन दिस वे, यू कैन opt, many options are there, you can opt in this way and that way. The basic issue is that कि उनको लर्निंग में हर एक का अपना लर्निंग का डिफरेंट स्टाइल होता है, डाइवर्सिफाई होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत तरीकों से पढ़ते हैं, आप एक को फोकस नहीं कर सकते कि ऑनलाइन लर्निंग सबके लिए ही बेनिफिशियल है, तो वो भी एक इरिटेटिंग और एग्रेसिव बिहेवियर की एक रीजन होती है। दूसरी चीज होती है फेयर, एलिमेंट ऑफ फेयर और अनसर्टेनिटी। तो ये भी चीज, यहाँ जो रोल टीचर का है, जो पेरेंट का है, वो पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रीवियस ईयर्स हमें इतनी डिफिकल्टी नहीं होती थी, इसलिए हम फेस टू फेस सेपरेटली भी बात कर लेते थे, इन क्लास भी एड्रेस कर लेते थे इन इश्यूज को। लेकिन अब वो टाइम है कि हमें अब सक्सेस स्टोरीज के थ्रू हमें वैल्यूज और बाय एस्टैब्लिशिंग रूटीन्स, हमें ग्राउंड रूल्स सेट करने की जरूरत है। वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज आवर होल टीचिंग अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन लर्निंग। हम अपनी क्लासरूम लर्निंग जो थी हमारी, फेस टू फेस एंगेजमेंट था स्टूडेंट्स के साथ, वो तो अब सिनेरियो है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत लिमिटेड उसका आपको पॉइंट नजर आता है। तो हमें अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को, चीज़ों को इस तरह इम्प्लीमेंट करना है, इस तरह लेके चलना, इम्पेक्ट करनी है उसमें वैल्यूज के। जैसे देखिए वर्ड्स बहुत सारे हैं जो मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन एक दूसरे के लिए एम्पैथी डेवलप करना थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, they need to think others as well, sharing and caring approach। अगर टीचर खुद एक्स्ट्रा टाइम देगी तो दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेगी, चाहे उसमें उसका अपना जा रहा होगा, और they need to discuss that point as well as a teacher, as a parent, कि बेटा देखें we are giving you some extra advantage, so you need to think कि how you can incorporate that with another person। आप अपने क्लास फेलोज का, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरमेंट के लोगों को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, मे बी दे आर इन नीड। तो एम्पैथी और शेयरिंग केयरिंग अप्रोच को आप इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करें, एस्टैब्लिश करें अपने रूटीन्स, अपने ग्राउंड रूल्स सेट करें अपने क्लासरूम्स के। दैट इज द आई थिंक। अच्छा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जी प्लीज सर। अच्छा थिंग इज दैट कि हम आजकल बहुत एग्रेशन बहुत ज्यादा आ गया है, चाहे वो बच्चों में देखें, चाहे यूथ में देखें, यंग जनरेशन में देखें, इनफैक्ट वी एज एन एडल्ट ऑल्सो। हाउ टू कंट्रोल आपके टॉलरेंस पावर को कितना स्ट्रांग होना चाहिए to cope up with the scenario, to cope up with everyone, whether it's your teacher, your parents, your family members, or your friends, or you are working on the computer, you are talking and chatting with your friends online. So आपकी tolerance power इस वक्त इस scenario में बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। उसके लिए आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेंगी स्टूडेंट के लिए, अपने कंटेंट के साथ, कि किस तरह से वो ओवर कर सकें, किस तरह से आप अपना फोकस को फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ आप एक पर्टिकुलर टास्क कर सकें। छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको डेली प्रैक्टिस करवानी है, रेपिटेशन में भी, और आप उनको कंटिन्यूसली रिमाइंड करवाएं, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी। सो दिस इज द टाइम दे कैन लर्न बाय डूइंग। आपकी जो हमारी फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म, जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो कहती है लर्निंग बाय डूइंग। तो आप जब आप करोगे तब आप सीखोगे भी, और इन सारी चीजों
चीजों को ओवरकम भी कर सकते। तो टॉलरेंस पावर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, आपका एग्रेशन रिड्यूस होता जाएगा और you feel kindness to others as well. You अच्छा, give space to others as well. इसके साथ एक चीज और है जो कि एक मेजॉरिटी लोग से हमें सुनने के लिए मिलती है। एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन है जो कि ये बात बोलती है कि जी ये जो वैल्यूज पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है हमारी यंगर जनरेशन की, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मिस नासरा, यू आर स्माइलिंग। मुझे लगता है मिस नासरा आप मुझे पहले बताएं बिकॉज यू आर स्माइलिंग ऑन दैट। एक्चुअली मैं तो इस क्वेश्चन पे मुझे पता नहीं क्यों ओके नासरा गो अहेड। आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक दिस। मुझे फील होता है कि हाउ अ पर्सन कैन आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल। मतलब कैसे ये सवाल ही कहाँ से आया है कि हमारे बच्चे किसके हैं? व्हाट वी आर यूजिंग द टेंस और सेंटेंस किसके हैं हमारे? और ये पोजीशन जो है, why when we question we lose this possession, why? So the very first thing, मेरे ख्याल में मैं 3 पॉइंट्स को इसके लिए इकट्ठा बाइंड करूंगी। The very first, हम खुद आदि नहीं इन तमाम गैजेट्स की, इन तमाम चीजों की, और हमने अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट से इंट्रोड्यूस करवाया था इन गैजेट्स के साथ, द गेम, ओनली द गेम। सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हम आपस में गैजेट्स यूज करते हैं। सो आई थिंक आई एम क्वाइट राइट। हमने तो उनको कभी ये एस्पेक्ट नहीं दिखाया था हाउ these things can be used for education। तो हम अभी एजुकेशन पे कैसे, जब एकदम टर्न हो गए तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। कुछ चीजों को मुनासिबत के तौर पे आते हुए वक्त लगेगा। एंड व्हाई वी आर सेइंग इट, वी आर सेइंग कि हमारे बच्चे इस सब चीजों से दूर हैं, तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू टेक फॉर आवरसेल्व्स फर्स्ट, बिकॉज मेरे ख्याल में हमें अपनी तरफ से लैकिंग खत्म करनी पड़ेगी। एंड वी शुड गिव देम द ओपन डोर टू आस्क फ्रीली। हमें वो वाला कायम करना पड़ेगा डेफिनेटली। जैसे कि सना ने कहा, वी हैव टू बी एक्सेप्टेबल, वी हैव टू बी वेरी ओपन कि वो हमसे कांटेक्ट और रब्ता कर सके। जैसे काशमा कह रही थी कि वो सबसे पहले हम उनको वो वाला प्लेस देंगे सीखने के लिए, देन दे विल बी कंफर्टेबल फॉर दैट। एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा हो जाती है, बट उनके अपने सिनेरियोस को समझकर और फिर चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना, दैट विल बी मोर बेटर आई थिंक। और मुझे वैसे भी we just need to give them I think only the direction, the right direction we need to channelize their thoughts. Absolutely. They are scattered right now. They are moving here and there, exactly, checking this is a human nature, not just youth, that हम चाहते हैं कि हम चीज को टच करके देखें क्या है ये, कैसे चलती है, क्या होता है। नहीं, और मुझे इसमें एक बात लगती है कशफिया नासरा कि हम आदत हो गई है शायद हम लोगों को कि बहुत आसानी से ब्लेम गेम करने की। जो इजी आसान टारगेट दिखता है हम उस पर ब्लेम डाल देते हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त लोगों को मुझे लगता है आसान टारगेट लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो वो तमाम ब्लेम उस पे डाल देते हैं। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि ब्लेम गेम करना है तो वाकई में बहुत आसान है। जो हम सोशल मीडिया एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का हम ब्लेम होते, यहाँ पर रोल आता है आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, आप ए रोल मॉडल, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फुलफिल कर रहे हैं टूवर्ड्स टू योर स्टूडेंट, टूवर्ड्स टू योर चिल्ड्रन। आपका रोल क्या है? आप मीडिया पहले भी था, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारे पेरेंट्स भी करते थे वो भी हमें बताते, तब भी था, गेम्स वगैरह तब भी थे, लेकिन तब हमारी वैल्यूज हमें ये समझाती थी, बताती थी कि ये सही है, ये चीज गलत है, ये चीज इतनी करनी है, ये चीज इतनी लिमिटेशंस में थी। तब पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे थे, उनका 100% सपोर्ट था। लेकिन अब क्या है, हमने
अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो डिवाइड कर दिया हमने, आधी लैपटॉप और सेलफोन्स को दे दिए कि चलो आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, आई एम यूजिंग माय सेलफोन, तुम चलो ये राइम्स देख लो या कोई कार्टून देख लो। सो हमने अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो आधी जिम्मेदारी हमारी है वो हमने दे दी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को। एंड नाउ वी स्टार्टेड द प्लेइंग गेम के ओके फाइन सोशल मीडिया ने बच्चे को बिगाड़ दिया, तो व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ? What you are doing right now? Exactly. It's your अच्छा time to एक correct them. अच्छा one more thing again, ये क्वेश्चन मेरा आप तीनों इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये मैं जो दो माएँ हमारे पास हैं उनसे स्पेशली मैं ये पूछ रही हूँ कि इस हाइब्रिड वॉर में आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट एजुकेशन सिस्टम, especially as a mother of teenagers? Gulfisha, it's really very difficult to give answer that yes, no, I am not. But again, I said that I believe on that mantra that learn, unlearn, and relearn. And relearn. So, okay, so we are in a phase of relearning. We unlearn our practices, and now we are in a phase to rethink our working as a management student as well. I quote one researcher, Deming. He shared his model of that plan, do, check, act. So in that way, I apply that in my teaching cycle as well. We need to plan accordingly. We need to do with that plan, start implementing that, but not test and pilot testing in that way, pilot project like that. Not hopefully it works, but if it's not, we need to check all the pros and cons in that. Then we need to act accordingly. We need to readdress the issues, we need to rethink the strategies, and then act accordingly. It's really very important time in educational scenario around the globe, not just in Pakistan, but Pakistan as it's an underdeveloped country. We are still in a developing phase, so we are facing more problem as we are not aware of these online learning practices which the developed countries are having. To some extent they are having that. So we need to, it's a good thing as well that we lag behind in a previous structure which we were following. But now it's the right time, it's a good time for Pakistan educational sector as well, that कि हम accordingly इस time frame में हम एक नई strategy के साथ वापस in हो सकते हैं global practice में. तो हमें अपनी practices को readdress करने की जरूरत है. We need to relearn. We need to plan accordingly. Absolutely. We need to do action accordingly. Miss Nasra, would you like to respond on that? Yes, definitely. Why not as mother? I think my question will be similar to Kashifa. First of all, मैं दोबारा इसको सबसे पहले तो मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि our young ones, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ. बहुत मुझे खुशी होती है कहते हुए कि they have values. ऐसी बात नहीं है कि they are out of values. They have values very first. हम सड़कों पे देख लें, अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे कभी कोई ट्रैफिक जैम हो, बहुत सारी और चीजें जहां हम उनके बहुत शोर करते हुए मोटर बाइक्स देखते हैं, वहां में ये भी याद रखना चाहिए कि वो अभी भी सीट दे देते हैं, वो अभी भी जगह दे देते हैं, वो अभी भी बहुत सपोर्टिंग होते हैं, वो अभी भी बहुत गाइड करते हैं. तो दे आर रेडी. We need to be ready to guide them, to counsel them, to take them towards the deeper way of the value or deeper aspect of it. I think very first तो मैं इसको accept करूंगी. The second thing is दोबारा ये काशिफा ने बिल्कुल सही कहा. अभी हमें जो मैं पहले भी कंटिन्यू कर रही थी, भी घर पे अपने बच्चों के साथ उस एक बाइंडिंग की जरूरत है. The task given by the teacher, जो हाफ पोर्शन वो टीचर ऑनलाइन टीचिंग के मोड में पूरा करने की कोशिश कर रही है, उसको कंटिन्यू पेरेंट्स ने बच्चों के साथ करना है, चाहे वो किसी भी एज के. इफ दे आर मतलब बिग वंस, still they need your time and your guidelines as babies. Still they need to be with you and still you need to be with them. Why we are complaining for that? If I am available for them, they must be available for me. I think they are expecting us with most of our time. Even we were discussing on many forum sites कि how to मतलब कि हम अपने घरों पे अपना टाइम किस तरह गुजारें. अभी तो हम लोग सारे घरों पे हैं, तो why don't we think about that? कि I think youth is ready. Youth have the values. We just
need to make it more stronger in a more stronger अच्छा way. अच्छा एक गुलफ्शा, मैं एक चीज चीज मैं ऐड आप करना तीनों चाहूंगी से प्लीज। प्लीज मिस सना प्लीज यहाँ पर आपने क्या, आई एम नॉट अ मदर राइट नाउ, बट थिंग इज दैट के पहले हमारे पेरेंट्स को ये नहीं शिकायत प्लीज होती रिस्पॉन्ड। थी। पहले हमारे पेरेंट्स को ये शिकायत होती थी कि भाई हमें पता नहीं चलता स्कूल में हो क्या रहा है, हमें पता नहीं चलता बच्चा कॉलेज जाता है पढ़ता क्या है, हमें पता नहीं होता बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है और क्या करता है। नाउ यू हैव एक्सपोजर ऑफ टाइम, आपके पास अब अनलिमिटेड टाइम है that you can easily see, keep check and balance on them कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपकी ये वाली जो कंप्लेंट थी डे 1 से कि हमें पता नहीं चलता हमें बच्चा पढ़ क्या रहा है, क्या कंटेंट है, टीचर क्या पढ़ा दिया, अब तो आपके सामने है। अब तो फेस टू फेस नहीं है, ऑनलाइन है, that you get a chance to get to know कि what your child is studying currently, and this is the time you can support, this is the time you can learn as well, this is the time that you interact with them, you can share your own ideas as the well. complete classroom is in front of the parents now. Exactly, now there should be no complaint from parents side कि यहाँ अच्छा पे पेरेंट्स को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा sure. एक चीज अब मैं अगर अपनी डिस्कशन में, हमारी जो डिस्कशन चली है उसमें मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, आप सबने एक बात कही, don't जी mind. प्लीज Can I add a single thing here? One more thing. I think we three are on the same point right now. मेरे ख्याल में अब हमें जो इस ऑनलाइन टीचिंग पे अपने बच्चों की जो स्पेस है ना, उसको भी रिविजिट करना चाहिए। अभी वो नहीं है, उसने कॉपी उठाई और लिखा और मुकम्मल किया और साइड पे किया, बट स्टिल बीइंग पेरेंट्स वी एक्सपेक्ट द सेम। और अब हमें उसकी स्पेसेस को भी अगर चेंज हो रही है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज, कैन यू ऑल हेयर मी? यस ओके एक चीज जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ अपनी डिस्कशन में, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड हो गया और क्वेश्चंस इतने सारे हैं, लेकिन एक चीज जो कि एज अ मदर मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्या पता मेरे तवज्जुह से या हमारे तवज्जुह से बहुत सारे लोग इससे कुछ वो करें। जैसे बात की हमने कि टीचर्स आर द रोल मॉडल्स। अब मैं अगर अपने बेटे की बात करूं, सो अब ऑनलाइन लर्निंग को ले लें, 11 बजे रात के मेरे बेटे के गूगल क्लासरूम पे उसका होमवर्क आता है, एंड द वेरी सेकेंड डे टीचर आस्क्ड के भाई काम कंप्लीट नहीं है, और मेरा बेटा मुझसे ये कहता है, मैंने कहा जब टीचर का मेरे पास मैसेज आया, मैंने उससे पूछा काम कंप्लीट क्यों नहीं है, तो वो कहने लगा कि मामा जब ये रूल टीचर्स पे स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं कि आप 3 बजे के बाद मैसेज नहीं करेंगे, 3 बजे के बाद आप टीचर्स को कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर रात 11 बजे हमें होमवर्क क्यों आ रहा है? सो डू यू थिंक कि ये भी हमारी उन्हीं वैल्यूज में से आता है, क्योंकि टीचर्स को भी रोल मॉडल के तौर पे ये छोटी छोटी चीजें फिर बच्चों को पिंच करती हैं, स्पेशली द टीनेजर्स? Yes, I also face, Gulafsha, I would like to answer this question, that being a parent, I also face the same situation which you discussed. Issue is that कि फिर मैंने वो discuss किया teacher से, so what was the issue behind it during meetings which is scheduled between teacher and parent for that online purpose only. तो उसमें बाज़ जगह ये सिचुएशंस भी थी कि हम जैसे कोविड के इन्वायरमेंट में है, लॉकडाउन हैं, चीज़ें हैं, केसेस भी हैं, तो शी शेयर्ड कि शी हैज वन कोविड पेशेंट इन हर होम। तो वो भी हमें बात में वही आती है कि मैंने बात की थी एम्पैथी की, तो बीइंग अ पेरेंट हमारा रोल भी यहाँ आता है कि हम उनको बताएं कि बी एम्पैथेटिक, सोचें कि मे बी कि टीचर इज ऑल्सो फेसिंग, इसको हैबिचुअल हो तो फिर एक अलग सिचुएशन है, लेकिन अगर समटाइम्स और फ्यू टाइम्स इट हैपेंस तो हमें उसको भी देखना चाहिए। वी आर आस्किंग आवर चिल्ड्रन टू लुक इन दैट वे एज वेल, बिकॉज अब इस वक्त जिस इन्वायरमेंट में हम हैं उसमें वेलबींग का एक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इमोशनल, फिजिकल, आपकी सोशल, हर किस्म की वेलबींग इन्वॉल्व हो रही है ना। तो हम अब बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को भी इस ग्राउंड पे भी सोचने के लिए छोड़ना चाहिए कि सोचिए अगर टीचर के घर में अगर कोई ऐसा पेशेंट है या शी हरसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम दैट, या कोई और सिचुएशन ऐसी है जो उसको वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, तो वो मे बी समटाइम्स इट हैपन। हाँ, वो एक अलग एड्रेस है, फिर आप बीइंग अ पेरेंट आप टीचर से डिस्कस कर लें अगर ये इश्यूज आते हैं, लेकिन ऐसा होता है और वी नीड टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स एज वेल। सही। अच्छा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब मैं आप तीनों से चाहूंगी इफ यू पीपल कैन गिव योर
take on that कि what strategies can best create or maintain the positive relationship between senior students and the teachers, or between students and the teachers ना. इस पे आप लोग अगर एक एक जुमले में कर दें, because हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है. प्लीज कौन स्टार्ट करेगा? नासरा, प्लीज. Yes. If you'll say me to say in a very small note, so I would answer values, the only way. Because they Sahi. are only missing. For seniors, for juniors, for everyone, we are missing values. When we knit them, they'll be together, make us comfortable with each other. And beneficial for each other, as well as for the community and as well as for the country. Yes, सही. कशफिया, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे प्लीज? Yes, I will continue with the Nasra's thoughts that हमें अपने values को ही address करने की और rethink करने की जरूरत है, to how to incorporate them with our youth. अच्छा, another thing is that being a teacher, being a parent, and being a student as well, I must say that we need to know your role, play your part. आप जब तक अपने practices के लिए खुद aware नहीं होंगे, we need to develop our own check and balance system, so we will be able or be in a better position to reinforce or to apply those values and to see those values in our learners. तो हम सबसे पहले we need to change ourselves. Change start with ourselves. एक छोटा सा step, एक छोटी सी query, एक छोटा सा response जो है, वो एक बहुत बड़े change का आगे एक बजा के societal change की तरफ चला जाता है. The teachers are changing agents and they are in a better position to bring change. Miss Sana, can you please because बहुत I'm so sorry definitely. to cut you, but time बहुत Sure, कम है it's हमारे okay. पास. मैं छोटे से वर्ड में एक बात छोटे से एक सेंस बताऊंगी कि अभी जैसे काशवा ने कहा, teacher is a change agent. Definitely, teacher is a change agent. Teaching can bring the reform to society. और वो सोसाइटी कौन है? वो सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं. व्यूज के साथ साथ यहाँ आप टीचर का एटीट्यूड, अपना बिलीव, अपने कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स कैन इन्फॉर्म यू. जैसे कि आपके मैंने कहा कि रात 11 बजे मैसेज आया, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग में सब पूछ लिया कि असाइनमेंट सब नहीं है. somehow there is issue, but still we are more or less facing the same. But अगर आप तो 11 बजे दिया है, तो at least you should have extra 24 hours to complete that particular task. तो आपके beliefs, आपके attitude, आपके characteristics, आपकी involvement बहुत ज़्यादा करती है as a change agent. So that's all about my side. So Miss Rafia, are you with us? Would you like to add something? Okay. So what I think, जो मैंने आज की पूरी discussion से perceive किया है, that I believe that innovative potential of our young people combined with technology is already providing powerful force on the roads to achieving success. Now we need to realize as parents and teachers कि हमें क्या करना है, और मुझे लगता है कि हमें उनको वो environment देनी है, and because what they want, they need the enabling environment so they can initiate, innovate and work productively. और हमें वो पाकिस्तान मिले जो हम चाहते हैं, a prosper, inclusive and leaving no one behind. So मुझे क्या कहते हैं, आज की पूरी जो बातचीत से जो चीज मुझे समझ आई है वो यही समझ आई है, और उसके लिए मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है. नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी. और सिर्फ उस नम करने की जरूरत है हमें उस मिट्टी को, क्योंकि जब हम उसे नम करेंगे तो फिर हम जिन वैल्यूज और जिन मोरालिटीज के सांचे में उन्हें ढालना चाहते हैं, जो कि अभी भी वो बहुत अच्छे हैं जैसे कि नासरा ने बोला, सो वो और बहुत अच्छी तरह हम उन्हें उन सांचों में ढाल सकते हैं. तो मुझे यही लगता है नरिशिंग कर सकते हैं उनकी.
एब्सोल्युटली, हम उन्हें नरिश कर सकते हैं, हम उनकी क्वालिटीज को, उनकी कैपेबिलिटीज को पॉलिश कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे यही लगता है कि इकबाल के इस शेर के साथ मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरी टॉक का बेहतरीन क्लोज पॉइंट मुझे लगता है यही है, इकबाल का ये शेर, कि हम एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज एल्डर्स, अगर हम अपना ये रोल समझ जाएं, अगर हम ये समझ जाएं कि हमें उन्हें वो पॉजिटिव डायरेक्शन, वो पॉजिटिव गाइडेंस देनी है जिससे हमारी यूथ एक स्टेबल जगह पर पहुंचे, बट विद दी वैल्यूज जो कि हम देखना चाहते हैं उनमें, जो कि अभी भी हैं उनमें। तो बस इस मिट्टी को नम करने की जरूरत है। एंड थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अगर आप लोग आखिरी में कंक्लूडिंग नोट कुछ कहना चाहें, सो यू पीपल कैन से दैट। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इकबाल की तो पूरी शायरी ऐसी है कि जिसपे आप ये देख सकते हैं कि खुदी का जो एलिमेंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी हर जगह पे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों पे। तो वो रूह बेदार करने का जो काम है ना, वो बेदारी का काम हम लोगों के पास है, पेरेंट्स के पास है। सो वी ऑल नीड टू चैनलाइज देयर थॉट्स, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो है ना, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सो आई गेस मिस नासरा, हाँ, मिस सना, वुड यू लाइक टू से समथिंग, बिकॉज फिर बस अब हम आई गेस शी इज ऑल्सो नॉट देयर, आई गेस। No, no, I'm here. जी जी जी, प्लीज प्लीज, अब बस Yes, बिल्कुल yes. 2 मिनट रह गए, जल्दी से आप और मिस नासरा बोल दे कुछ। ठीक है, सर की बात को कंटिन्यू करें, और आपकी बात को आपने लास्ट से बात की कि नम करनी देर है, बाकी हम इनको मोड ही कर लेंगे। दिस सेट हमें मोटिवेशन को, वैल्यूज को और अपने सेल्फ एटीट्यूड को और टॉलरेंस पावर को कंट्रोल करना है, इंक्रीज करना है और इनको पॉजिटिव एटीट्यूड में लेकर आना है, ताकि लर्निंग इज अ प्रोसेस। जो टीचर स्टूडेंट्स हो, टीचर पेरेंट्स हो, स्टूडेंट पेरेंट्स हो, इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग प्रोसेस कि हम लर्न करके इनोवेटिव लेकर आए। मिस नासरा, बस वन लाइनर। आई गेस मिस नासरा का कनेक्टिविटी इशू हो रहा है। सो बस इसी नोट के साथ बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपनी यूथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें उन्हें तमाम चैलेंजेस के साथ हमें के बावजूद हमें उन्हें एक रास्ता देना है। और जो कि मुझे लगता है कि आज की हमारी इस बातचीत से बहुत ज्यादा शायद लोगों को कुछ समझ आए, कुछ वो हो कि इस हाइब्रिड वॉर में हम किस तरह अपनी यूथ के साथ टैकल कर सकते हैं, उनको किस तरह गाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिस नासरा इज बैक। मिस नासरा कुछ कहना चाहेंगी? जस्ट वन लाइनर, कोई बात नहीं, बस वन लाइनर। यस, मैं तो दोबारा वही कहूंगी कि वी हैव एवरीथिंग इन आवर यूथ, or definitely they are very much precious for us, or our teacher need to be the part of learners now. Absolutely. Like a change agent. ठीक है, बस हमारी यूथ जो है वो नेशन बिल्डर है, जैसे कि कायदे आजम ने भी कहा था, हमें बस उन्हें रास्ता देना है, और जो कि हम दे रहे हैं और देने की कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड thank you so very much to Ms. Rafia Mudassir, to the platform of Nurul Huda Education, that they have given us such opportunities to discuss these kind of serious issues on this particular important day. So from my side, thank you so very much, and Allah Hafiz to all of you. Allah Hafiz. Thank you so much.